21-year-old Yash Soni is one of the first heroes of the Indian PUBG mobile scene. One of the original founding members of Team Soul, he stuck with the organization since playing his first tournament in DreamHack 2018. With some major accomplishments under his belt and having represented the country in a number of international events, Viper is easily one of India's most experienced and recognized players. However, underneath that, Viper is one of India's top players who's built a reputation for himself, for his versatility and being a master of his craft. While he may not feature as often on the kill lists and the MVP lists, Viper has shown time and again that he can fit into any role and any situation and work it to his advantage. This is the story of Viper. My name is Yash Soni. My in-game name is Soul Viper, and I'm 21 years old, and I'm from Mumbai. मैं नहीं गया कवर पीछे से आया एक लास्ट ओ लास्ट ऐसे तो नहीं होता ब्रो वाइपर ओपी इन द चैट Actually, I used to watch WWE a lot since childhood, and my favorite was Randy Orton, and his nickname was Viper. So every game which I used to play, मेरा nickname वही होता था हर game में Viper. Like most young adults, Viper too found his love for gaming through consoles and the PC. Actually, I used to play every game, console games. शुरुआत से PS2, PS3, PS4 उसमें जो भी गेम्स थे मतलब पीसी से शुरुआत बचपन तो पीसी से हुई थी तब काउंटर स्ट्राइक और बाकी बहुत सारी पीसी गेम्स भी थी एंड उसके भी बहुत पहले वो रोड रैश वगैरह वो सब बचपन में खेलते थे तो गेमिंग का वैसे बचपन से शौक तो था ही बट नेवर थॉट आई वुड डू इट प्रोफेशनली आई यूज्ड टू प्ले अ सिमिलर गेम कॉल्ड फ्री फायर जो तभी मोबाइल गेम खेलती सेम बैटल रॉयल गेम था एंड मेरे फ्रेंड्स सोसाइटी में हम लोग नीचे बैठ के रोज शाम को खेलते थे एंड देन केम पबजी which had drastic changes in graphics and everything dynamic भी बहुत बढ़िया था so then I switched to PUBG and फिर शुरुआत में रैंक पुश के लिए टाइम पास के लिए हम खेलते थे क्लासिक्स तो मॉर्टल से तो मैं बहुत बाद में मिला उसके पहले आई यूज्ड टू प्ले विद RIP क्लैन जो हम कुछ फ्रेंड्स नहीं फॉर्म किया था जो इन गेम मिले थे हम सब रैंक पुश कर रहे थे उस वक्त तो बस दैट वाज इट मतलब प्रोफेशनली कुछ खेलते नहीं थे बस रैंक पुश के लिए फन के लिए खेलते थे एंड फिर रैंक पुश के थ्रू प्लेयर्स मिले गेम में एंड then DreamHack and then we got on with it. Every player has a moment in their life where the sun shines upon them. Viper's shining moment came at DreamHack Mumbai 2018. Actually, it was very new for me. कुछ सोचा नहीं था उस वक्त कुछ मतलब because कुछ आइडिया ही नहीं था and उस वक्त DreamHack के बाद we met 8-bit Thug and उसने पूरा एक्सप्लेन किया शुरू से and because उसने obviously he played PMSC 2018 जो सबसे पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था PUBG का एंड ही न्यू कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है और आगे क्या ग्रोथ का पोटेंशियल है तो DreamHack के बाद उसने हमारा गेम प्ले देखा एंड देन ही सेड मतलब उसने सब देखा मतलब ही एनालाइज्ड कि क्या पोटेंशियल है हम में भी एंड क्या हो सकता है इस टीम का तो उस तरीके से टीम बनी एंड ही हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट मतलब थ्रू आउट द जर्नी पूरा जो मेरा शुरुआत से मेरा यूट्यूब से लेके सब कुछ मतलब उसके गाइडेंस से मतलब मेरे को कुछ आइडिया नहीं था बिकॉज आई डिड नॉट प्ले मतलब प्रोफेशनली तो खेला ही नहीं था स्ट्रीमिंग का तो एकदम ही आइडिया नहीं था सो उस वक्त आई एम वेरी लकी आई हैड पीपल लाइक मॉर्टल एंड थक टू गाइड मी When you think about a professional PUBG mobile player, you usually imagine someone who's thought about being the greatest at the game. But Viper's story is different. PUBG के पहले मेरा बीकॉम चल रहा था 11th 10th एंड 12th कंप्लीट कर लिया था 10th में 90% आए थे तब तक डिसेंट स्टूडेंट था उसके बाद कॉलेज में आते ही थोड़ा वो हो गया गेमिंग में फिर PUBG शुरू हो गया था तब मिड 12th के बाद से थर्ड आई गेस मेरा बीकॉम शुरू हुआ फर्स्ट ईयर तब से PUBG शुरू हुआ एंड मैं खेलता था टाइम पास के लिए पूरा दिन एंड बीकॉम के साथ आई वाज गोइंग टू डू MBA एंड कोइंसिडेंटली मेरी CET की एग्जाम्स वर ऑन द डेट ऑफ माय PMIS फाइनल्स 10th March 2019 सो मैंने घर पे बात की तब एंड कन्विंस देम कि अगला अटेम्प्ट दे दूंगा बिकॉज फाइनल्स वाज अ ह्यूज डील तब पहला टूर्नामेंट था इतना बड़ा इंडिया में एंड उसके फाइनल्स में हम सिलेक्ट हो गए थे तो वो खेले एंड वहाँ जीत गए तो फिर आगे सही हो गया सब So the meantime he's doing is destroying out the nades, hoping for the best. There it is. Once again, Ronak, the Molotov is burning down. This is not looking good at all. God's rain is, or rather, now they're moving up, trying to no! get back and forth, and they're gonna be able to get it all! Winner, chicken dinner! Round one coming through. What a matchup! A clutch play
for Seoul and B Squad. PMIS का जो ट्रॉफी उठाने वाला मोमेंट था वही एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का. सो तब से एक थिंग स्टार्टेड टू गो uphill. With the PMIS win, Viper and co look forward to securing themselves as the best in India. They did that with style when they came first at PMCO's Spring Split India 2019. Your team at number 1, going to Berlin, Germany, is none other than Team Seoul! Their journey became a legend among Indian fans, and with tickets for the Berlin Global Finals, all eyes were on them. Unfortunately, they couldn't recreate their success as they came 12th. However, their one chicken dinner on the international stage is going to be remembered for ages. In the grass, listening for every sound cue, every moment. There they see him. That's the end of ARG. 2 teams left, 4v1. ELG is going to do what they can, but I don't think it'll be enough. Seoul takes it home. Work. They had the cube. They earned it. They fought off Team 69. They made a push to stay 4 strong. They stopped Top Esports and they took. Their team went from a name with a few big guns to everyone becoming a sensation. But his fans weren't the only people who took notice of him. Enter 8-Bit Thug. उसने एक रफ आइडिया दे दिया कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पोटेंशियल है. एंड हम तो बिकॉज हमारा एक पहला टूर्नामेंट था जो हम मुंबई में रह के गोरेगांव में ही वो इवेंट हुआ था, सो घर से परमिशन लेके गए थे कि हाँ एक इवेंट हो रहा है, सब पबजी का हम खेलने जा रहे हैं. तो तब तक मतलब कोई ऐसा बड़ा सीन नहीं था कि कॉम्पिटिटिव खेलेंगे आगे कुछ करेंगे. बट उसके बाद वी गॉट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उसने सब समझाया कि कैसे चलता है, कैसे होगा आगे. एंड मतलब वो बेसिक वो छोटा सा तब फर्स्ट कन्वर्सेशन वैसा ही था कि आगे क्या क्या पोटेंशियल है इसमें, वो उसने पूरा बैठ के समझाया था हमको. PUBG Mobile grew bigger in India, and so did Viper's dreams and ambitions. However, this came at the cost of his parents' dream for him, for some time. Some say that you should struggle and hustle till your idols become your competitors. In Viper's case, his idol became his teammate. एक्चुअली उस वक्त ऐसा था कि यूट्यूब के अलावा कुछ सीन नहीं था. पबजी वॉज जस्ट यूट्यूब एंड जस्ट टूर्नामेंट्स तब निकल रहे थे बाहर. एंड देयर वर वेरी फ्यू यूट्यूबर्स बैक देन एंड मॉर्टल वाज वन ऑफ देम. सो तब उस वक्त के सारे बंदे मॉर्टल को बहुत फॉलो करते थे, इंक्लूडिंग मी, एंड आई वाज अ ह्यूज फैन. एंड दे यूज्ड टू प्ले टुगेदर. नोआ, आइकॉनिक पॉटेड, उनका केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया था, देखने में बहुत मजा आता था. एंड वही था, तब उस वक्त यूट्यूब के थ्रू बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, मतलब बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए थे. तो आई वाज वन ऑफ देम. एंड जब मॉर्टल के साथ भी मेरा जब ये शुरू हुआ, व्हेन ही इनवाइटेड मी टू सोल क्लैन, तब सीजन 3 चल रहा था आई गेस, एंड रैंक पुश चल रहा था हमारा. तो तब भी प्रोफेशनली खेलते नहीं थे, बट सोल क्लैन में बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हुए थे एंड आई वाज वन ऑफ देम. एंड देन जो कॉम्पिटिटिव लाइनअप का हुआ, दैट स्टार्टेड फ्रॉम DreamHack बेसिकली. Seoul did not become India's most loved team overnight. Their dedication brought them there. They too faced times of uncertainty over their career. कॉन्ट्रैक्ट था, बट वो ऐसा होता कॉन्ट्रैक्ट भी कि इफ यू परफॉर्म यू विल गो अहेड, इफ यू नॉट शायद वो लाइनअप टूट भी जाती, डिसॉल्व हो जाती, कुछ नई लाइनअप बन जाती. सो अ लॉट वाज ऑन स्टेक एट दैट टाइम, बट उस वक्त वो परफॉर्मेंस निकली और जीत भी गए. While Viper shot to media fame, Seoul's audience was yet to catch up. When asked about Seoul's popularity, he says, आई थिंक पॉपुलैरिटी जो सोल की है वो शुरू हुई थी मॉर्टल से, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रीमर. बहुत मतलब पहले से, जब सोल फॉर्म नहीं हुई थी उसके पहले से ही वॉज अ यूट्यूब स्ट्रीमर एंड इन्फ्लुएंसर. तो उसने जो ऑडियंस बिल्ड किया है, दैट हैज हेल्प्ड अस एज वेल. मतलब हमारे यूट्यूब ग्रोथ में भी हमें हेल्प किया है. एंड पर्सनली भी, एक पर्सनल लेवल पे भी मॉर्टल का जो हम्बल नेचर है उसकी वजह से बहुत लोगों ने सपोर्ट किया. एंड वो हम में भी कुछ वो क्वालिटीज आई है कि मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है. सो ऑन बेसिकली एक पॉइंट जो है वो, मतलब वी कनेक्ट विद आवर ऑडियंस इमोशनली. तो बहुत इमोशनल कनेक्शन है. हमारी जीत पे वो लोग हमसे ज्यादा खुश होते हैं और हमारी हार पे हमसे ज्यादा दुखी भी होते हैं. तो उसको इमोशनल कनेक्शन है जो ये लेवल पे रखता है. कम ऐसा देखने को मिलता है. मेरे अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया, बाकी कहीं देखा भी बहुत कम होगा कि इतना मतलब लोग इतने हद तक प्यार करते हैं हमें. तो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. लाइक हेट है तो मतलब प्यार है, इसीलिए नफरत भी है. मतलब वो गुस्सा आता है, एक्चुअली उनका फ्रस्ट्रेशन होता है जो हम समझते भी है, दैट इफ वी कुड नॉट परफॉर्म, उनका वो लोग भी मायूस होते हैं. तो वो हम ट्राई करते हैं कि अगली टूर्नामेंट में हम बेटर परफॉर्म करें टू मेक देम हैप्पी. सो वही बात है कि मतलब इट्स नॉट लाइक नहीं होना चाहिए ऐसा, बट वी आर प्राउड ऑफ इट. मतलब विल डील विद इट. मतलब जब हेट मिले तो वो भी डील कर लेंगे एंड
प्यार तो obviously. While he was firm about making it big in PUBG Mobile's competitive scene, surprisingly, his YouTube career did not start the same way. In fact, he says that he would do an MBA over YouTube. Actually, I would not have started YouTube at all. I would be doing मतलब BCom के बाद I would have gone for MBA, which I was preparing for. So बस वही MBA कर लेता. His popularity hasn't made him arrogant. In fact, he has used his reach for greater causes. वो बोलते हैं कि मतलब भगवान ने हमको केपेबल बनाया किसी को हेल्प करने, तो वी शुड डेफिनेटली हेल्प देम. एंड मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ टू donate and help for a good cause, so I would definitely go for it. His love for gaming isn't limited to PUBG Mobile either. और games में भी मुझे ये करना है अपना मतलब audience just likes to see PUBG at this point I know, but और भी बहुत सारी games है जो इससे ज़्यादा entertaining है, and I would like to try them, and लोग भी I hope enjoy करेंगे वो future में. Towards the end, we asked him about his plans for the future. I think we'll be much more composed as a team, and the communication that we needed to work on, we'll work on that as well. And since IGL was Sangwon before, now Mortal has taken up the IGL again, so a little change in that as well. And also we'd like to go more aggressive, go for kills, which will improve our gunfight eventually. So yeah, a lot of improvements needed in those areas, and we'll try to do as much as we can.